1, 2, 3, 4 9জনক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত শীৰ্ষ নেতা অমৃতপাল সিং এতিয়া ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰৰ আলহী। বিশেষ বিমানযোগে অমৃতপাল সিঙক ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ আনিছে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত ৰাখিব ধৃত অমৃতপাল সিঙক। আজি পুৱতি নিশা পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মোগাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অমৃতপাল সিঙক। 36টা দিনৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে খালিস্তানী নেতাগৰাকী। 18 মাৰ্চৰ পৰা পলাতক হৈ আছিল অমৃতপাল সিং। পূৰ্বে 9জন খালিস্তানী নেতাক ইতিমধ্যে জনাইছো ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছিল ইজনৰ পাছত সিজনকৈ। সেইখিনি মুহূৰ্তত যথেষ্ট সমালোচিত হৈছিল, বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিছিল, অসমক সমালোচনা কৰিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমালোচনা কৰিছিল কিয় খালিস্তানীক অনা হৈছে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ। বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল। তাৰ পাছত শীৰ্ষ নেতা অমৃতপাল সিঙক পুৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে 8:30 বজাত অমৃতসৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে। অমৃতপাল সিঙক ৰাখিলে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত 10জনলৈ বৃদ্ধি পাব খালিস্তানীৰ সংখ্যা। স্বাধীন খালিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষক হিচাপে কাম কৰাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এইসকল খালিস্তানী এজন এজনকৈ, আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকেও ভাবুকি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীক যে এনে কাম নকৰিব। তেনেধৰণৰ বহুকেইটা খবৰ আপোনাক সমান্তৰালকৈ জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সৈতে সাংবাদিক আনন্দ বিষ্ট থাকিব, সাংবাদিকগৰাকী শংকৰ আনন্দ থাকিব আমাৰ সৈতে, আৰু শংকৰ আনন্দে বিষয়টোক লৈ সবিশেষ আৰু জনাব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক 4টাকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে অমৃতপাল সিঙক এতিয়া ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ আনি থকা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়লৈ অনা হৈছে খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙক। বিশেষ বিমানযোগে অমৃতপাল সিঙক ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ অনা হৈছে আৰু 10জন হ'ব এতিয়া খালিস্তানী। আৰু সেই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে মন্তব্য কৰিছে। কি কৈছে পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ শুনাম। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद NSA का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। আৰু সেইখিনি কথা ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰা হৈছে পঞ্জাৱৰ সকলোখিনিক, যিসকলে এই কাৰ্যটো সমাধান কৰাত সহায় কৰিলে। সেয়া আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনাক তেওঁলোকৰ ভইচ। আমাৰ তিনিগৰাকীকৈ সাংবাদিক এই মুহূৰ্তত সাজু হ'ব। আমি পঞ্জাৱৰ পৰা শংকৰ আনন্দক পাম, নাহৰকটীয়াৰ পৰা আমি উৎপল চলিহাক পাম, যিগৰাকী ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত থাকিব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি জেছিম আহমেদক পাম। তিনিগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, শেহতীয়াকৈ পঞ্জাৱৰ খবৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। শংকৰ আনন্দ আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে। शंकर आनंद जी, अभी हमने बातचीत सुनी, पुलिस ने बताया, और क्या जानकारी है आपके पास, जानना चाहूंगा। देखिए, तकरीबन 9:30 बजे के लगभग में पंजाब पुलिस अमृतपाल को लेकर पंजाब डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। डिब्रूगढ़ स्थित जो एयरपोर्ट है वहां से लेकर डिब्रूगढ़ जेल तक का जो सफर होगा वो बेहद सुरक्षा व्यवस्था के साथ में होगा। स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी इस मामले की जानकारी दी गई, और उसके बाद जब जेल में अमृतपाल को लाया जाएगा उस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी को NIA और केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB के द्वारा विस्तार से पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि अमृतपाल ने किस तरह से पंजाब से लेकर विदेश तक का अपना नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क को बनाने के बाद किस तरह से पंजाब के अंदर में एक शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया। ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है, उस लिहाज से ये तमाम पूछताछ की जाएगी। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से NSA
एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिस तरह से शंकर आनंद जी, एनएसए के बारे में जानेंगे, आपसे जानना चाहूंगा एनएसए के बारे में जानेंगे, लेकिन 8:30 बजे उन लोगों को निकलना था। आपने तभी बताया था कि 1 घंटा देर हो सकते हैं। उसके बाद यहां पहुंचने में भी थोड़ा देर, या उसके टाइम के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहूंगा। उसके बाद एनएसए के मामले में जानना चाहूंगा, आपसे जानूंगा, बाद में जानना चाहूंगा। अभी ये टाइम के मामले में कुछ आगे या पीछे हो सकता है? देखिए, अब इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब पुलिस विशेष विमान से अमृतपाल को लेकर रवाना हो चुकी है और 9:30 बजे रवाना हो चुके हैं, 1 घंटे के बाद। जी, रवाना हो चुकी है और जैसे ही वहां पर डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस और इसके साथ में जो डिब्रूगढ़ पुलिस की जो टीम होगी वो उसे लेकर जेल तक पहुंचाएगी। पहुंचाने के बाद आज देर शाम तक आज एनआईए की टीम या आईबी की टीम जो है, ये दोनों टीम जो है बाकायदा वहां पहुंच जाएगी और हो सकता है कि कल सुबह से ऑफिशियली इस मामले में पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो अमृतपाल से वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि अमृतपाल से कई मायनों में पूछताछ किया जाना है कि किस तरह से उसका एक नेटवर्क तैयार हुआ। इसके साथ साथ पिछले 36 दिनों के दौरान में वो कहां कहां छुपा, कौन कौन से लोग उसको मदद कर रहे थे और उसकी मंशा क्या रही है, किस तरह के ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी, जिस तरह से अमृतपाल एक अलग राज्य, अलग देश, अलग करेंसी, इन तमाम मसलों को एक क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था। तो इसके पीछे वो कौन सी ताकत है जो अमृतपाल को मदद कर रही थी। तो इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। एनआईए के द्वारा इस मामले को ऑफिशियली यानी इस केस को मामला दर्ज किया जा सकता है और इस मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एनआईए भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो एनएसए के बारे में आप बोल रहे थे, इससे कुछ ना कुछ हाल शायद ही निकलेगा। तो एनएसए के बारे में जानना चाहूंगा अभी। शंकर आनंद, आपका वो समाप्त नहीं हुआ था, आपने स्टार्ट किया था। देखिए, एनएसए की अगर बात करें तो एनएसए जो एक्ट है वो बहुत ही मजबूत एक्ट कहा जाता है और अगर इस एक्ट की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 1980 में 1980 में देश की सुरक्षा के लिए और केंद्र सरकार को एक बहुत ही मजबूत शक्ति देने के लिए बनाया गया था। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कि यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को खास खतरा और जिससे अगर महसूस किया जाता है तो उस व्यक्ति को बिना किसी एफआईआर के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और उस मामले में एनएसए जो रजिस्टर्ड किया जाएगा, एनएसए एक्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल एक्ट बनाया गया है और जैसे ही एनएसए लगता है किसी व्यक्ति के खिलाफ तो उसके खिलाफ कहा जा सकता है कि बेल मिलना, माने कि जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एनएसए एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के वक्त में उस एक्ट को भी जोड़ा गया है क्योंकि इस मामले में जिस तरह से पंजाब के अंदर में अमृतपाल एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र के तहत पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था, वहां की कानून व्यवस्था को एक प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण राज्य कहा जा सकता है क्योंकि पंजाब एक बेहद संवेदनशील राज्य है। क्योंकि पंजाब का काफी बड़ा जो एरिया है वो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा यानी कि कुछ गलत लोगों के संगठनों के द्वारा इस मामले को तुल देने का प्रयास किया जा रहा था। अमृतपाल और अमृतपाल से जुड़े हुए उसके संगठन से जुड़े हुए कई लोगों को एक आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। तो वो कौन लोग थे जो इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहे थे और अमृतपाल को आगे बढ़ाना करके पंजाब की जो कानून व्यवस्था है उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी और इसके लिए कल सुबह में हो सकता है कि एनआईए की टीम और आईबी की टीम लगातार एक साथ में पूछताछ कर सकती है। तो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर और जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाने का भी निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दे दिया गया है। और जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जेल प्रशासन को आज सुबह में ही तकरीबन 7 बजे विशेष तौर पर अलर्ट किया गया और जब डिब्रूगढ़ स्थित जो एयरपोर्ट है वहां से लेकर जेल तक का जो सफर होगा, जब काफिला गुजरेगा तो वहां पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो विशेष तौर पर मुस्तैद होंगे और उन तमाम मामलों पर सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद रहेंगे। तो शंकर आनंद जी, आपको हम लाइन पे रखना चाहेंगे। अभी एक बड़ा खबर आया है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान किया है। वो बोले हैं कि भगोड़ा आखिर कितने दिन भागेंगे, कानून के साथ हाथ लंबे हैं तो उनको पकड़ा जाएंगे। वो पकड़ने ही वाले थे। दहशत फैलाने वालों के ऊपर
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, आपके पास आएंगे। अभी डिब्रुगढ़ जाना चाहूँगा। ডিব্ৰুগড়ৰ আমাৰ জেছিম আহমেদ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। ডিব্ৰুগড়লৈ আমি যাব বিচাৰিম, সেই বিষয়টোক লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কথা পাতিম। जैसिम अहमद अपना ओर আহিছোঁ। शंकर आनंद जी, अभी आपको धन्यवाद। बाद में आपसे फिर बातचीत होगी। জেছিমৰ সৈতে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। জেছিম আমাৰ সৈতে থাকিব, যিহেতু অলপ সময়ৰ আগতে আমি কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে ডিব্ৰুগড়ত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ অহা হ'ব আৰু তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে সষ্টম হৈ আছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা তেওঁলোকে ৰাখিব। এই সন্দৰ্ভত বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত জেছিম আহমেদে আমাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যিহেতু বিমানবন্দৰত আমাৰ সাংবাদিক উৎপল চলিহাও আছে, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত উৎপল চলিহাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। উৎপল চলিহাও আমি বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিমানবন্দৰত নামাৰ লগে লগে 9:30 বজাত ইতিমধ্যে তেওঁলোক তাৰ পৰা ৰাওনা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় গৈ তেওঁলোক উপস্থিত হ'বগৈ, ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ। সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জেছিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। জেছিম, শেহতীয়া আপডেটছ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বিষয়টো সংক্ৰান্তত। হয় কৃপাঞ্জল, মই পোনপটীয়াকৈ সেই ঠাই দেখাম য'ত চেণ্ট্ৰেল জেইল, ইয়াত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ডিব্ৰুগড় 1860 খ্ৰীষ্টাব্দতে এইটো নিৰ্মিত এটা জেইল আৰু আচলতে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা জেইল। আৰু জেইলত ইয়াত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা, বিষয়টো আটাইতকৈ স্পৰ্শকাতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ কথা, যিহেতু নিৰাপত্তাৰ কথাটো সকলোৱে উল্লেখ কৰি আছে। ইয়াত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা মই দেখুৱাইছোঁ। এইসকল নিৰাপত্তাৰক্ষী ব্লেক হেড কামাণ্ডোৰ পৰা আদি কৰি CRPF জৱান মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰু একে সময়তে কৃপাঞ্জল, মই সেই দৃশ্য দেখুৱাম। এয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় চেণ্ট্ৰেল জেল। এইটো নেশ্যনেল হাইৱে 37, নেশ্যনেল হাইৱে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আৰু এই 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এই দিশে যদি মই জেলৰ ঠিক সন্মুখৰ পৰা যদি জেছিম আপুনি ৰাস্তাটো পাৰ হোৱাৰ আগতে অকণমান সময় ৰাখিছোঁ আপোনাক। আমি ৰাস্তাটো পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি সেইখিনি দেখুৱাব। এইখিনিতে আপোনাক অকণমান সময় ৰাখি উৎপল চলিহাৰ ওচৰলৈ যাম। বিমানবন্দৰত উপস্থিত আছে উৎপল চলিহা। আমি উৎপল চলিহাৰ ওচৰলৈ যাম। কিমান সময়ৰ ভিতৰত আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, বা আপুনি আহি পোৱাৰ কিবা খবৰ আপোনাৰ হাতত শেহতীয়া কি আপডেটছ উৎপল? হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব, যি অমৃতপাল সিঙক লৈ ইতিমধ্যে পঞ্জাৱ পুলিচে পুৱা 9:30 বজাতে বিশেষ বিমানযোগে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰলৈ আচলতে আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আৰক্ষী আৰু CRPFৰ এটা বৃহৎ দলে যি অমৃতপাল সিঙক ডিব্ৰুগড় যি জিলা কাৰাগাৰলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হ'ব। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যি ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পিছফাল অৱস্থা। আচলতে যিকোনো বিশেষ লোকক যদি অনা হয় বিশেষ বিমানযোগে, তো এই পথেদি মই যিটো দেখুৱাই আছোঁ, ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছোঁ, এই পথেদি আচলতে অনা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে এটা বৃহৎ দলে আচলতে অমৃতপাল সিঙক লৈ যাব কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত। আৰু ইয়াৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আচলতে যি ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰাগাৰ আছে, জিলা কাৰাগাৰলৈ প্ৰায় 10 পৰা 15 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হ'ব। আৰু তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে যি পথৰ যিসমূহ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিব লাগে, তেওঁলোকে সেইসমূহ নিৰাপত্তা বেষ্টনী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে। আৰু আমি গম পোৱা মানে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে পঞ্জাৱ পুলিচে অমৃতপাল সিঙক লৈ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব। দীপাঞ্জল। উৎপল চলিহা, আপুনি কিছু সময় লাইনতে থাকক। আমি আপোনাৰ পৰা সেইখিনি আপডেটছ পালোঁ। আৰু কিছু সময়, অলপ সময়ৰ পাছতে আহি উপস্থিত হ'ব সেই জেছিমৰ ওচৰলৈ আকৌ যাব বিচাৰিম। জেছিম, আপুনি ৰাস্তাটো পাৰ হৈ দেখাই আছিল ঠাইখিনিৰ কথা, নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে আপুনি জনাই আছিল। আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ জেছিম। হয় কৃপাঞ্জল, মই যদি দেখুৱাওঁ এই পৰিৱেশ মই ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ। এই চেণ্ট্ৰেল জেলৰ সন্মুখত যথেষ্ট CRPFৰ জৱান মোতায়েন কৰা হৈছে, ব্লেক হেড কামাণ্ডোজ মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু ব্লেক পান্থা বিভিন্ন আচলতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আচলতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু একে সময়তে এইটো 37 নেশ্যনেল হাইৱে, এই বাটেৰে আচলতে গৈ প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ 35 পৰা 40 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ, য'ত আমাৰ সতীৰ্থ উৎপল চলিহা উপস্থিত আছে, সেই মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে এই পথেৰে আনি ইয়াত কাৰাবন্দী কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰত যি অমৃতপাল সিং আছে। অমৃতপাল সিঙৰ আন 9 গৰাকীকৈ সহযোগী ইতিমধ্যে এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে। আজি অমৃতপাল সিঙক প্ৰমুখ যি ৱাৰিছ পঞ্জাৱীৰ যি প্ৰমুখ অমৃতপাল সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ পাছত ইয়ালৈ অনা হৈছে। আৰু কৃপাঞ্জল, এষাৰ কথা ক'ব লাগিব, ইয়াৰ পূৰ্বে এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যিসকল 9 গৰাকী আচলতে অমৃতপালৰ সহযোগী আছে, দলজিৎ সিং খালচী আছে। দলজিৎ সিং খালচী এগৰাকী অভিনেতা বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু তেওঁৰ যি অমৃতপালৰ যথেষ্ট সহযোগী আছিলে আৰু ফিনেন্সৰ দিশটো চোৱা বুলিও বিভিন্ন সংবাদমেলত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু তেনে সময়তে দলজিৎ সিং খালচীৰ পৰিবাৰ আচলতে আৰু পুত্ৰসহ ইয়াত 2 দিন পূৰ্বে আহি গৈছে। তেওঁলোকে 1 ঘণ্টাকৈ সময় ইয়াত কথা পাতিছিলে, কথোপকথনৰ সুবিধা দিয়া হৈছিলে। আৰু তাৰ পাছতে তাৰ এদিন যদি পূৰ্বলৈ যাওঁ, তেতিয়া
NSAৰ এটা দল আহিছিলে NSAৰ আচলতে এটা পৰিষদৰ এটা দল আহিছিলে সেই পৰিষদৰ দলত এগৰাকী ন্যায়াধীশ আছিলে তেওঁৰ নেতৃত্বত আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে আহি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে যিসকল কাৰাবন্দী আছে অমৃতপাল সিঙৰ সহযোগী যিসকল কাৰাবন্দী তেওঁলোকৰ সৈতে আচলতে কি কথা হৈছিলে বা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সেই দলটো কাইলৈৰ পৰা হয়তো আহিব পাৰে আৰু এনেধৰণৰ কথা বতৰা হৈ থাকিব পাৰে দুয়োগৰাকীকে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ য'ত আমাৰ উপস্থিত আছে উৎপল চলিহাৰ পৰা ৩৫-৪০ কিলোমিটাৰ পাছতে আহি মোহনবাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে কাৰাগাৰত উপস্থিত হ'ব দুয়োগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে আমি প্ৰতিটো শেহতীয়া আপডেট পৰৱৰ্তী সময়তো লৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জেচিম উৎপল আৰু বহু খবৰ সমৃদ্ধ হৈ থাকিব নিউজ কেনত এটা বিৰতি লৈছোঁ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড